everyone, day 6 of the 100 days Python. So today we are talking about the definition of the data types in Python. So the first data type is integer. Integer includes 0, 1, 2, 3, 4, 5 and n number of times numbers. String is a combination of words and sentences. Like अगर मुझे अपना नाम लिखना हो, ठीक है, मुझे अपना नाम लिखना हो, अपने प्लेस का नाम लिखना हो, तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं. फ्लोट इंक्लूड्स द डेसिमल नंबर्स. डेसिमल नंबर में भी जैसे हम 25.99 लिख रहे हैं या फिर 60.2 लिख रहे हैं, so all these things will come into the float data type. Boolean, it is a data type with two possible values, true and false, just like math, because these terms came from the Boolean algebra. And the fifth is a none. It's a keyword used to define the null value or no values at all. तो जब हम किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू सेट नहीं करते तो वो नन में जाती है या नल वैल्यू होती है.